In this lecture, we will discuss about linear programming problem. So before starting the linear programming problem, we will discuss the definition of operation research. So what is operation research and origin of the operation research? Basically, the origin of the operation research was found in during the First World War and Second World War. So for optimizing the things. So optimization technique, basically we can say that, or operation research. So at that time the definition was defined as OR. We write in short, OR is the art. OR is the art of winning war without actually fighting it. Actually fighting it. Fighting it. Okay, so use some weapons, etc., other things for winning the war. So there are several definitions at that time for operation research. So another definition we can define as operation research is the application. Operation research is the application of scientific methods, techniques, tools to problems involving the operations of system so as to provide those control of the operations with optimum solution. Optimum solutions of the problem. So basically one word we use here, that is optimum. Optimum. Suppose when we are using the operation research, we need to optimize. We need to optimize the resources. When we are talking about the profit, so the profit should be maximum. When we are talking about the loss should be minimum. The minimum loss, maximum profit. So basically our focus on operation research is that, so to optimize the resources. So to optimize the resources, that means in minimum number of labor, we can take the maximum work. So we start the topic. First topic of this is linear programming problem. So first topic is linear programming problem. In short, we say that LPP. So linear, the word linear, which that means any equation, system of equation which have degree 1 is called linear. Now, so when we understand the word linear, when we do the programming and so do the some solutions of the problems, so then we define as when the optimized function, when the optimized function and its constraints
All are in linear form. All are in linear form means having degree 1. So then the problem is called linear programming problem, LPP, otherwise non-linear programming problem. So we use two words. One is for optimized function. One word is optimized function. Second word we use is constraints. So optimized function, that means we are talking about the profit or loss. So for doing profit or loss, how many constraints we have used, such as we have some material, that material having some cost, consuming some hours, some time, so etc. We put into the constraints, then we optimize that. We require the time, profit, loss, etc. So we will discuss here. Now, when we talk about the optimized function, so when we talk about the optimized function, so optimized function, so this basically depend on the profit or loss. So this optimized function, we can say that this will be minimum or maximum. If we are talking about the loss, so that loss will be the minimum or profit will be the maximum. And this optimized function we denoted as Z. So we can say that minimum of Z, maximum of Z is equal to Cx. So here C represent the cost or X represent the variables. So variables, that means x1, x2, x3, xn. So these are the variables. So this can be written as x1, x2, x3 or xn are the variables. Similarly, when we represent the cost also represent for each variable in this form, C1, C2, C3, Cn. So now when we define the objective function, which may be minimum or maximum, so we can write on minimum or maximum of Z is equal to Cx. So this Cx we can write down as C1x1 plus C2x2 plus C3x3 and plus and so on Cn xn. So C1, C2, C3 represent the cost. So cost always positive. So then we write down some subject to constraint. So subject to constraint, subject to constraints, so in short we can write down st. So st will be written as a11x1 plus a12x2 plus a13x3 plus and so on a1n xn, which may be in the form of less than equal to, which may be in the form of equal to, or maybe in the form of greater than equal to b1. Similarly, for second constraint may be a21x1 plus a22x2 plus a23x3 plus and so on plus a2n less than equal to or greater than equal to b2. We can write down for third, and for fourth or general term we can write down as a m1x1 plus a m2x2 plus a m3x3 plus and so on plus a mn xn less than equal to greater than equal to bm. Okay, and we write down as x1, x2 decision variables, x3, xn all are greater than 0. So these are called decision variables. These are called decision variables. और डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी कंपनी सपोज पेन पेंसिल प्रोड्यूस कर रही है दैट मीन्स इट शुड बी इन पॉजिटिव वे. ओके, एनी कंपनी
manufacture the toffees, etc. So that should be the positive. So we take all the decision variables always positive. So now this can be written as this can be written as optimize optimize z is equal to cx in short, and ax is equal to sorry, less than equal to or greater than equal to b, and all the decision variables is positive. So we can write down a in the matrix form. So where a is equal to a11, a12, and so on, a1n, a21, a22, and so on, a2n, and last we can write down as am1, am2, and amn. So a be the matrix of order m by n, and where b equal to, so this can be written as b1, b2, and so on, bm. So bm is matrix of order m by 1, and x be the decision variables that are always positive. So this is the formulation basically when we do the formulation. Now we start the mathematical formulation of LPP. So how to do the mathematical formulation and solution? So mathematical formulation of LPP. So for doing the mathematical formulation, we also need to do the solutions. So some theoretical questions are given, some case study type questions are given. So we do the formulation of that, then we do the solution of that. So when once we do the formulation, then we also require to do the solutions. So we will discuss these two things on same time. So once we do the formulation, then we require also the solution. तो जब हमने अगर फॉर्मुलेशन कर ली उसकी, तो उसका हमें सॉल्यूशन भी करना है. तो सॉल्यूशन के लिए, तो वी जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन आल्सो हियर. The solution of linear programming problem. So how to do the solution of linear programming problem? So for doing the solution, so we write down as there are two methods. So basically we have two methods for solving linear programming problem. For solving linear programming problem. So method one is we know that the graphical method. So first method we known as the graphical method. So very popular method, but it having some constraints. Graphical methods, it having some foundations, restrictions. That means, so for solving problems by using graphical methods, so it is necessary. So the unknown variables or decision variables is 2. So the number of variables, when the number of variables are 2, because we have two dimensions, that means one is x-axis, second is y-axis. This is our first quadrant, that is positive quadrant. So we are going to solve the problem related to this positive quadrant. So when we have only two variable, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो ही हमको ग्राफिकल मेथड लगाना है. सपोज फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, 2x plus y equal to 5, so then we use the graphical method. If more than two variables are given, अगर दो से ज्यादा वेरिएबल दे रखे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? So we have very powerful method, that name is simplex method. So this is very powerful method to solve any type of problem known as the simplex method. So here we can write down as any number of variable, any number of variable we can solve. अगर हमें दो वेरिएबल की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है तो दो की भी सॉल्व कर देंगे. अगर दो से ज्यादा वेरिएबल भी दे रखे हैं तो वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग द सिंपलेक्स मेथड. So for first method, so we take the first method, that is the graphical method.
तो ग्राफिकल मेथड से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बेसिक रूल्स हमें पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वी राइट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ओके। तो अगर हमको प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स अभी बेसिकली वी टेक द इक्वेशंस एज ए कंस्ट्रेंट। तो फॉर कंस्ट्रेंट्स वी टेक थ्री साइंस। हमने तीन साइन लिए हैं। यहाँ पर स्टेप वन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारी प्रॉब्लम 3x + y लेस देन इक्वल टू 5, 4x + y लेस देन इक्वल टू 6, अगर हमारी कोई भी इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी का मतलब समझते हैं, इनइक्वलिटी मतलब लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वलिटी है, दैट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वलिटी में चेंज करना होगा। तो स्टेप वन में हमारा जो प्रोसीजर है, तो हम उसी प्रोसीजर पे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वी चेंज इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी। तो फर्स्ट वी चेंज इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी। तो पहले हमें इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेकंड स्टेप। तो फॉर सेकंड स्टेप देन वी ड्रॉ टू लाइन, one is horizontal एंड सेकंड इज वर्टिकल। जो मैंने अभी आपको बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो वी ड्रॉ टू लाइन। अगर वेरिएबल अगर हमारे जैसे एक्स और वाई में है, तो एक्स हमारी एक हॉरिजॉन्टल के लिए हो गई, वाई हमारी वर्टिकल के लिए हो गई। अगर x1 x2 ले रखे हैं तो ऐसे ही x1 हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और हमारी x2 हमारी वर्टिकल हो जाएगी। तो आफ्टर second step we move to the third step. For third step, now we draw lines for each constraint। कंस्ट्रेंट्स के लिए अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे, कि जब हमने इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया तो टू लाइन, जैसे सपोज यही हमारा एग्जांपल है, इसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे जैसे इक्वेशन हो गई, इसको इक्वलिटी में चेंज किया तो दिस कैन बी कन्वर्ट इनटू 3x + y इक्वल टू 5 एंड 4x + y इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, स्टेप थ्री में इन दोनों लाइन को ड्रॉ करना है। दोनों लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें रूल पता होने चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, अब हम बात आती है ड्रॉ करने की। तो ड्रॉ करने के लिए व्हाट विल वी डू, तो फर्स्ट वी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन वन, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन दे दिया। तो y इक्वल टू 0, so this gives us 3x is equal to 5, so the value of x is equal to 5/3। so where we get the 5/3, so here this is the origin, so now having 0 0, now we can take एक scale, कोई भी एक scale ले लेंगे। so when we take the scale 1 2 3 4 5, similarly we have taken 1 2 3 4, so this is 5/3, 5/3 means 1.6 something, so 1.6 something approximately here। so we plot this point, तो इस point को हमने plot कर दिया। now we put x equal to 0, x इक्वल टू जीरो इन वन, x इक्वल टू जीरो वन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो y इक्वल टू 5 कहाँ होगा, ये हमारा 4 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे ले लेते हैं कि y इक्वल टू 5 होगा। तो y इक्वल टू 5 को हमने प्लॉट कर दिया और वी जॉइन दीज टू पॉइंट्स बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज अवर फर्स्ट लाइन, तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे कि दिस इज अवर 3x + y इक्वल टू 5। ऐसे ही सिमिलरली आप दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x कितना हो जाएगा 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। तो 3/2 कहाँ आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट मिड पे आ जाएगा इस पर, तो 3/2 हम यहाँ ले लेंगे। और फिर जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो फिर उस लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर।
So to draw both the lines, now we move to the next step. That step is step 4. So in step 4, what we will do? So for step 4, now we find. So after drawing the line, so we find the permissible region. Permissible region. So we find the permissible region. So for finding the permissible region, we put x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अगर x और y में इक्वेशन है, कहाँ पर? इनइक्वलिटी में, in the inequality. If the inequality inequality satisfied, so then the region from line to origin, फ्रॉम लाइन टू ओरिजिन। अब कैसे बात कर रहे हैं हम? कि हमारी जैसे फर्स्ट इनइक्वलिटी है, फर्स्ट इनइक्वलिटी क्या है हमारी? ये है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया? x इक्वल टू भी 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया और लेस देन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। तो जो रीजन होगा इस लाइन का, 3x प्लस वाई का, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा टुवार्ड्स टू ओरिजिन। तो ये रीजन इसका, ये जाएगा टुवार्ड्स टू ओरिजिन। इफ सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो दिस रीजन टुवार्ड्स टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारा कहाँ है? ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ हो उसका रीजन आएगा। नाउ तो सेम थिंग हम करनी है जितनी भी नंबर ऑफ कंस्टेंट दे रखी हो। तो अभी तो हमने एक को ड्रॉ किया है केवल, तो एक के बेसिस पे हमने बता दिया एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, कि अगर परमिसिबल रीजन हमें चेक करना है, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो टुवार्ड्स टू द ओरिजिन जाएगा रीजन। अगर सेकंड पार्ट हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट में अगर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इफ नॉट सेटिस्फाइड, इफ इनइक्वलिटी नॉट सेटिस्फाइड, तो द रीजन लाइन टू इनफाइनाइट। अब वो दैट में भी एबव जा सकता है और इनफाइनाइट। So this is not fixed, but we will take some questions to understand this. Now, after this, we talk the word permissible. Permissible region means, so the common region. So we find the common region. So the common region of all the lines, common region of the all the lines are called permissible region. Permissible region. ऑल द लाइंस मीन्स, सपोज करो ये हमारे पास एक्सिस हो गए, एक लाइन हमारी ये है और दूसरी लाइन हमारी ये है। अब दोनों ही लाइन इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो दोनों का ही रीजन कहाँ जाएगा? टुवार्ड्स टू ओरिजिन जाएगा। जब टुवार्ड्स टू ओरिजिन जाएगा तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा बनेगा? दोनों का, तो दोनों का कॉमन रीजन बनेगा ये छोटा ट्रायंगल। तो ये छोटा ट्रायंगल, तो दिस ट्रायंगल इज नोन एज द परमिसिबल रीजन। तो अब जहाँ पर ट्रायंगल है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे, तो इस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है, ये तो ओरिजिन हो गया। अब इन पॉइंट्स पे हमें उसके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब हम जाएंगे कहाँ पर? स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 हमारा क्या कह रहा है? स्टेप 5 के लिए, देन फाइंड ऑल पॉइंट्स। तो देन वी फाइंड ऑल पॉइंट्स। तो अभी मैंने आपको बताया कौन से पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो वी फाइंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो वी फाइंड ऑल, और जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे जो परमिसिबल रीजन के उसमें आ रहे होंगे, तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द परमिसिबल रीजन, परमिसिबल रीजन एंड पुट द वैल्यू इन ऑप्टिमाइज फंक्शन।
पुट द वैल्यू इन ऑप्टिमाइज फंक्शन। और वहां से क्या होगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन्ड होंगी, और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी उसको फिर हमें कहाँ पुट करना है, ऑप्टिमाइज फंक्शन में। और ऑप्टिमाइज फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम और जेड है या मिनिमम ऑफ जेड है, वो भी हमें किस में दे रखा होगा, एक्स वाई के टर्म में दे रखा होगा, 3x + 4y। और सपोज करो जी हमारे जो परमिसिबल रीजन के पॉइंट आ गए, 2,3 आ गया, यहाँ हमारा 3,2 आ गया। फंक्शन हमारा किसका है, मैक्सिमम जेड है। फंक्शन हमारा क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम जेड ले रहे हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे परमिसिबल रीजन में, तो हमने सपोज किया कि हमने 3,2 पुट किया, तो 3,2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 3 पुट किया, वाई की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो 3 3 जा 9, 9 + 8 कितना हो गया, 17 हो गया। अगर हम दूसरा पॉइंट पुट कर रहे हैं, ये कहाँ पे आया हमारा, 3,2 पे आया। अगर सेम हम पुट कर रहे हैं 2 3, तो 2 3 पे क्या आएगा, 2 3 पे आएगा तो हम यहाँ 3 × 2 करेंगे और +4 × 3 करेंगे, तो ये कितना, 3 2 जा 6, और 6 + 12 18। तो 18, तो ये कहाँ मिल रहा है हमें, 2 3 पे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आएगा हमारा, सेकंड इस पॉइंट पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है हमारी, 2 3 पे आ रही है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड द graphical method procedure. So now we will do the questions in next class.